Welcome, sir. Good morning, sir. Agarwal ji, namaskar. Namaskar, sir. Sir, we have with Namaskar. us our Honorable Joint Secretary, sir, Shri Vinit Mathur, sir, who is an Indian Postal Service officer. I'd like to request only those who are speaking can on their mic, otherwise kindly mute. Yeah, they can unmute. Ji Sudhir ji, now I think you can introduce Joint Secretary, sir, please. Rajesh bhai, shall we start? Yeah, sure. Yeah. Correct. वायफाय चालत नाही यांचा Pradeep bhai, sir. Pradeep bhai. सुधीर भाई स्टार्ट कर लीजिए. I'm here, Sudhir bhai. Before the question, तुम्हाला पटवून दिलंय बघा. Namaskar, sir. Can we start our meeting? Please, Sudhir ji, please. Vinit Mathur ji, namaskar, sir. नमस्कार. आशुतोष जी, अग्रवाल जी, नमस्कार. मैं आपकी प्रोफाइल आपका दो मिनट पढ़ के मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूँ. Okay. Ashutosh Agarwal ji is Director in charge Legal Metrology, Minister of Consumer Affairs, Government of India. Sir, first of all, you introduce Joint Secretary, sir. Yes, sir. Sir, Joint Secretary का मैं पहले पढ़ूँ. Sorry, मैं माफी चाहता हूँ. Vinit Mathur ji, he is IPS, Indian Postal Service 1994 batch. He is a senior bureaucrat. Namaskar, sir. Namaskar. He is a Bachelor of Engineering, Electronic and Communication, Master of Business Administration, Marketing and Finance, Master of Public Affairs, Hubbard Humbly Institute of Public Affairs, University of Minnesota, USA. Joint Secretary, DOCA since January 2020. Earlier served as the Deputy Director General, Ministry of Communications, Postmaster General, Vadodara. नमस्कार साहब. So I सब आप हमारे सामने उपस्थित हैं. बहुत खुशी हुई. इसके बाद मैं आपका प्रोफाइल पढ़ूँ सर. सर पहले हम ऐसा करते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी सर से एक इनॉग्रेशन करा लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ही हैज टू लीव अर्ली, ही हैज सम अनदर मीटिंग, सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू काइंडली इनॉग्रेट दिस वर्कशॉप एंड सो दैट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सर highly obliged, sir. Please continue, sir. जॉइंट सेक्रेटरी सर, प्लीज. Thank you, Pradeep ji. Thank you, Ashutosh ji. Thank you, all the guests. जो लोग आज हमारे इस आइसक्रीम एसोसिएशन की वर्कशॉप में सम्मिलित हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं. आज ये बहुत ही हमारा RRSL जो सेंटर है अहमदाबाद का, एक खास तौर पे बहुत नजदीकी रूप से आइसक्रीम एसोसिएशन और उनके यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ काम करता है. हमारा जैसे कि लीगल मेट्रोलॉजी इज अ डिपार्टमेंट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट्स और सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हमारी प्रेजेंस रहती है. हम साइंटिफिकली आपके मेजरमेंट्स को सपोर्ट करते हैं. आपका जो वॉल्यूम है आइसक्रीम्स, किस तरीके से आपके वेरियस पैकेजेस चलते हैं, और फैमिली पैक है, आपका ब्रिक फॉर्मेट्स है, एंड मेनी अदर फॉर्मेट्स जिसमें कि आप आइसक्रीम को एग्जैक्टली वॉल्यूम्स को मेजर करके और पैक करते हैं. और पैकेजिंग की सर्टेन कंडीशंस हैं हमारी लीगल मेट्रोलॉजी की. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ
legal descriptive regulations which are required to be followed while we are giving a packaged commodity also. So both the things are meeting there. There is a requirement of a legal metrology measurement issues, your calibration of equipment, your entire process needs to be calibrated, and it has to be seen that it is against the standards, it's working fine. Then the entire packaging and the description and prints on the packages have to comply with the legal metrology conditions. So I understand कि हिंदुस्तान में जो आइसक्रीम का कंजम्पशन का चलन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. मैंने पीछे अभी 5 मिनट पहले कुछ डेटा इसका सर्च करने की कोशिश की. हालांकि हम चीन और यूएसए के मुकाबले पर कैपिटा जो कंजम्पशन है आइसक्रीम के वॉल्यूम्स का वो काफी कम है. 400 मिलियन मिलीलीटर पर कैपिटा हमारे देश में आता है प्रति वर्ष का एक आइटम, और वहां पर 3000 है चाइना में, और यूएसए में तो उससे भी 4 गुना अधिक है. सो I also understand, I have spent a lot of time abroad, and मुझे ये जानकारी है कि वहाँ के जो पैकेजिंग सिस्टम्स हैं and the volume through commercially retail में भी जो वो buckets of ice creams का distribution system है in modern and developed worlds, वो अभी हमारे यहाँ आना अभी इतना popular नहीं है. But I understand कि हमारे यहाँ small packaging and small consumption, but the frequency of consumption is more पे काफी गौर किया जा रहा है. So I understand हमारी जिस तरीके की इकोनॉमी है और हमारी पर पर्सनल कैपिटा सिस्टम्स हैं, वहाँ पे स्मॉल पैकेजिंग एंड इनोवेटिव पैकेजेस का खास तौर पे बहुत अच्छा मार्केट है. इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था जो कि शैम्पू के सैशेस थे. शैम्पू इंडस्ट्री ने बड़ी बोतलों से उसको छोटा करके एंड दे गॉट इट डाउन द लाइन राइट अप टू a very common person who can possibly buy a 1 rupee or a 2 rupee sachet. So there is multiple ways for marketing, but there are statutory requirements of the government where every pack has to have certain conditions, numbers, legal descriptions. The FSSAI requirements are also to be followed here. And I understand our association is working together, and we as a government are to support for greater production and faster transmission of the ice cream across the country, and its consumption is getting popularized more and more, and we will be seeing a greater per capita consumption in the country soon. एक एरिया है जिसमें आप लोग काफी अच्छा काम करते हैं, and I am also in touch with certain associations or world leaders are there in developing flavors of the ice cream. So there are multiple flavor. There are two ways in which probably we segment the consumption of ice cream. One is by way of packages. So I have spoken and touched about the packages. The other is the flavors. So multiple kind of flavors are there. And here I would probably, of course, you know that if you involve the consumers per se, और उनसे ही साथ लेके यदि हम क्या नए flavors और develop कर सकते हैं, वो उसका support बहुत अच्छा रहेगा. इसका एक एडजंक्ट इंडस्ट्री है आपका फ्लेवर्स का, एंड दूसरा है आपका एडजंक्ट इंडस्ट्री मिल्क का एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की. सो बोथ गो इन टैंडम with the ice cream industry, and I think the association is doing extremely well, and most of us are following all the legal procedures, and we are declaring upfront the MRP and so forth, and your discounting mechanism, and when you give one pack or one brick with one brick free and so forth, they all follow our legal metrology declarations of packaged commodities. And the association would work in tandem with the government in case this particular workshop brings in newer issues for us to probably look and examine. We would certainly be most welcome to do that. आपके जो भी suggestions हैं या amendments हैं हम incorporate कर सकते हैं, हम देखेंगे. तो मैं आशा करता हूँ आज के deliberations इस workshop में इस particular meeting में हम सबको as an ice cream association and an industry, we would possibly be trying to target कि हमारा per capita consumption at least in the next 2 to 3 years चाइना को क्रॉस कर जाए
और हमारी इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो करे. With these words, I thank Ashutosh ji and the association and its representatives for inviting me to this inaugural session of your meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. You have given us a big chart, big task, because we are just 400 and now we have to take it from 400 to 3,000. So it is a big task, but certainly the industry is doing better, and we will expecting that we have to reach at this 5 trillion economy. Certainly every sector has to do. Thank you very much, sir. Thank you. रिएक्शन दूसरी चीज है. Thank you. तो उससे आने लगे नहीं. तो लीव हो जाएगा सब मीटिंग. सुधीर जी, अभी हम क्या कर सकते हैं? Now there are two things. One is if you want to have a small अच्छा बड़ा चल रहा था. what we have, my request is kindly mute your mic if we are not speaking. आप माइक म्यूट करिए. Yeah. So my request is there is one option, either we can take the questions, whatsoever the doubts you are having, we will discuss first doubts, and otherwise I can have a small presentation under which what amendments have been done recently since last 1 year under the package commodities rules. We can discuss that. So it is up to you what you want to start. We'll have presentation first. Okay. We'll have presentation. Then we'll have the question and answer. Okay. Now is it my presentation is sharing? Yes. Okay. Thank you. Basically, as far as legal metrology is concerned, we are all aware the purpose is to ensure that the women's and measurements are correct. And I think that in India, now we are not getting the complaints that I'm getting less quantity or short delivery. These type of complaints are now basically removed. Very few, maybe 1 in 1,000 may come, otherwise everything is okay. Basically, we are having now a very good confidence in between trade, industry and the consumer. And there is a good harmonious environment for conducting the business in India with the help of all these rules, regulations and the laws. See, the legal metrology, as we are all aware, this Legal Metrology Act came in 2011, from 1st of April, after repealing the earlier acts, because my old friends as Mr. Sudhir Shah, who is we are all aware, Gandhi Sahab and all, we are all aware that this Legal Metrology Act came into force after repealing the earlier Standards of Weights and Measures Act and the Enforcement Act 1976 and 85 respectively. Now we are having a single act which is basically to establish and enforce the standards of weights and measures. As we are all aware that all the units are MK system of units, SI system of units, in which meter, kilogram and second we are taking. We are regulating trade and commerce only in weights, measures and number. We are basically the legal department, as we are all aware, this Department of Consumer Affairs is responsible, is the nodal agency for implementing of this Legal Metrology Act. This Legal Metrology Act is a very simple act which has only 57 sections. Penal provisions have been increased. Penal provisions means only the compounding sum or the fine has been enhanced. The standardization of units of weights and measures is now based on metric system. We have the provisions for the declarations on prepackaged commodities. We have the provision for approval of models of weights and measures which you are using in your factories, like a weighing machine or a weigh bridge, or a filling machine or a gravimetric filling instrument. All are basically approved, verified and stamped by the legal metrology officers of the state or the central government. There is a prohibition of manufacturing, repairing, etc. of the weighing and measuring instruments. We are also having a provision for verification. There is another very good provision under this new act that a company can nominate one of its director under the Legal Metrology Act for compounding. He will be responsible for the offenses, and if there is an offense done by a company unintentionally, the compounding will be done by the company and the responsible director. So all the directors will not be booked if there is a provision or they have made one nomination. Under this Legal Metrology Act, we have made all our services of the central government are online. Nobody has to send a single paper to us. Everything is online. We used to issue the certificates maybe online as well as hard copies we used to issue, but we don't receive any of the hard copy from any of the applicant. We have the portal. You can submit your application on the portal, whether it is the registration of packaged commodities or the nomination of a director. It can be done online. All the facilities are online, and all are, I think we are issuing large number of certificates regularly. I remember that more than 50 certificates in a day
For the packaged commodities, we are issuing since last many months. So that means large number of industries who were not having the registration earlier, now it is very easier for them to get them registered and to comply the law. It is very easy also. When you are complying, you can understand what are the other requirements. My request to the industry is not only these yourself again involved in this. 15-20 industries which are basically, because you are, when you are working in this organized sector, you know all the rules, all the regulations, all the changes. But if we see the remote areas, the manufacturers who are sitting at a small place, how he will understand what he has to do. Not only small places, even in Delhi there are large number of, even I just take one example of the namkeen manufacturers. The namkeen manufacturers, there are in Delhi, I think there are more than 100. About them I am aware, so they may be more than 100, but I know about 100 of the people who are manufacturing namkeen in Delhi, but they don't know what are the regulations, what are the rules have been changed since last 1 year, and what they have to declare now. So that is again a big problem in our country. We are regularly issuing the press notes, press briefs, and the newspaper cuttings. In the newspaper also this is being mentioning, but again it is a big problem. तो हमारी सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि किस तरीके से एक छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर को भी, पैकर को भी बताया जाए कि आपको कंप्लाई क्या करना है, आपको क्या क्या डिक्लेरेशन देने। मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा एसोसिएशंस के साथ कि हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री के, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल. whenever you will request them, certainly we will come and we will explain them what are the requirements. Nowadays with this thanks to this COVID, हमें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन बैठ करके सारी की सारी चीजों को डिस्कस किया जा सकता है, बताया जा सकता है. किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे ईमेल पे, मोबाइल में, व्हाट्सएप पे जब भी कभी जरूरत है तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में अवेलेबल है. एज वी आर ऑल अवेयर कि हमारे पास मास का किलोग्राम में होगा या वॉल्यूम का लीटर में होगा, इस तरह से. बट वॉल्यूम इज नॉट ए बेस यूनिट. मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, these are the three basic units which we generally use, apart from 4 another units which are in temperature, current, luminous intensity एंड द मोल. सो इन सबको मिलाकर के 7 हमारी बेस यूनिट्स हैं. इसके अलावा जहां पर जो ज्यादा यूज होता है वो आपका मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इन कॉमन इंडस्ट्री. यदि अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक ओएमएल मेंबर कंट्री है. हम 1955 में जब ये ओएमएल बना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, तो 1956 में ही हमने इसको साइन कर लिया और हम इसके मेंबर बन गए. इवन हमने जो मीटर कन्वेंशन था जो 1875 में बना था, उसको हमने एक साल के बाद साइन किया 1957 में. तो इसका बेसिक पर्पज यही है कि जितने भी लॉज, जितने भी रेगुलेशंस हम बना रहे हैं या जितने भी स्टैंडर्ड्स हम कंट्री में ला रहे हैं, अपनी जितनी मेंबर कंट्रीज हैं, उनका सिमिलरिटी होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए. हमारे यहां भी ऐसा ही है. यदि आप देखेंगे तो जो साइज ऑफ लेटर्स हम बात करते हैं पैकेजेस के ऊपर, दे आर आल्सो एज पर द ओएमएल स्पेसिफिकेशन और दे आर बीइंग यूज्ड इन अदर गुड कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैव बीन टेकन. ऑल द प्रोविजंस आर बेसिकली लाइक दैट. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एंड अदर दिस लीगल मेट्रोलॉजी एज पर द ओएमएल रिकमेंडेशंस. वी आर आल्सो कंसीडरिंग टू ऐड मोर equipments. This legal metrology act is basically applicable for all type of transactions, whether it is any contract for sale, purchase, exchange, or for any other purpose. It is for any assessment of royalty, toll, duty, or other dues, or the assessment of any work done, wages due, or services rendered. So this is the purpose of this legal metrology act, where we found where we actually regulate the transactions. See, under this act, seal, stamp, all are being verification, and label, all are being defined. If we talk about the label, label is nothing. It is any written, marked, stamped, or printed or graphic matter affixed to or appearing upon any prepackaged commodity. So under rule 2, under section 2J of the Legal Metrology Act, the word label has been defined, because when we talk under the packaged commodities rules, we say that there should be a label. So as we see in the picture, this is a label on which all the declarations are being given, and we have to make the declarations as per the requirement of the packaged commodities rules in such a way so that we can place it on a package. If we talk about the rules, we have 7 rules framed by the Government of India, and for the implementation of this Legal Metrology Act, under which the packaged commodities rules are more important for the industries. I'm sorry, I think presentation is. Now it is shared. Is it visible? My screen is visible? Yes, sir. It is visible. Thank you. My request is kindly don't disturb this sharing, please. I'm sorry. So basically, the packaged commodities rules are being used by all the industries wherever we are
manufacturing the products or we are packing the products or importing the products. So as far as these apart from these package commodities rules, we are also using the general rules where the weighing or measuring instruments are used for the verification and the statistic purposes. If we talk about the prepackaged commodity, it is very well defined under section 2L of the Legal Metrology Act, which states that a commodity which without the purchaser being present is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained with therein has a predetermined quantity. So basically, this is a package which was manufactured or packed when the customer was not present there. Similarly, the section 2F provides that a label means, and it, as I have already discussed, any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any prepackaged commodity. Section 18(1), it provides for declaration on prepackaged commodity and restricts manufacturing, packing, selling, importing, distribution of prepackaged commodities unless they conform to prescribed declarations. There are some few mandatory declarations which have to be made on all prepackaged commodities, whether it is MRP or name and address of the manufacturer, etc. So these are the declarations which have to be made on all prepackaged commodity. Many times it is observed that one of the declaration is left out or somewhere there is something wrong in the declaration. My request is, whenever you just find this information, you got this information that there is some problem in this package, you immediately kindly send a request letter to us by mail or by post that there is a problem in our package and we want to get some relaxation, we want to get some time for making these corrections. We will certainly try to get it done as soon as possible. Generally, we used to get it done within a week or 10 days. So if there is any problem in any of the packaging material, you can kindly come to us. आप हमें बता सकते हैं कि मेरे इस पैकेजिंग में ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती हो गई है, इस पैकेजिंग को अब मैं कैसे सुधारूं. तो जब भी हमारे पास आता है तो जनरली 1 वीक से 10 डेज के अंदर हम लोग उसको जनरली परमिशन दे देते हैं. यदि पैकेजिंग में कोई मिस्टेक हुआ है या पैकेजिंग मटेरियल बहुत सारा हमारे पास बचा रह गया है जिसको कि हमें करेक्ट करना है. सेक्शन 18(2) के अंदर ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो एडवर्टाइजिंग होगी, इफ इट मेंशंस द रिटेल सेल प्राइस, उसके साथ नेट क्वांटिटी को भी डिक्लेयर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. यदि मैं कहता हूं 1 पैक 100 रुपीज, आई हैव टू मेंशन कि ये जो 100 रुपीज का है उसमें कितने केजी है, 1 केजी, हाफ केजी या 100 ग्राम, वो हमें मेंशन करना होगा. दिस इज अ सिंपल रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 18. अंडर सेक्शन 36, the penal provisions are being made. Section 36(1) defines that if we are selling, manufacturing, packing, importing, distributing, offering, delivering or otherwise transferring, offering, exposing or purchasing for sale any prepackaged commodity which does not conform to the declarations of the package एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट. यदि हमारे पास कोई भी पैकेज कमोडिटी है सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या एक्सपोज करने के लिए, हमने इंपोर्ट की है, मैन्युफैक्चर की है या पैक की है, उसके लिए यदि हमारा कहीं मिस्टेक हो जाता है तो पहला जो फाइन है वो 25,000 रुपए का होता है, दूसरा फाइन 50,000 रुपए का होता है और तीसरा फाइन 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक हो सकता है, या इसके साथ इंप्रिजनमेंट का भी प्रोविजन बनाया गया. बट मैंने आज तक कोई इंप्रिजनमेंट इसमें नहीं देखा, कोई इसको, बिकॉज इंप्रिजनमेंट का कोई इसमें बनाने का कोई मतलब भी नहीं है. यदि कोई एरर हो गई है, हाँ, यदि कोई इंटेंशनल एरर बार बार करता है तो दैट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन. कई बार क्या होता है, कोई गलती से रह जाती है कोई चीज, तो उसके लिए लॉ में प्रोविजन है कि कंपाउंडिंग करके भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाय 2 टाइम्स. सिमिलरली एट द सेम टाइम यदि हम बात करें सेक्शन 36(2), ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट डिलीवरी के बारे में. यदि कोई सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पैक करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वेयर एवर देयर इज एन एरर इन द नेट क्वांटिटी कम है, तो फर्स्ट ऑफेंस में 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक, 10,000 रुपीज से 50,000 रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है. सेकंड और सब्सटीक्वेंट ऑफेंस में इसके लिए इंप्रिजनमेंट का भी प्रोविजन बनाया गया है और फाइन का 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का प्रोविजन बनाया गया है, या दोनों भी किए जा सकते हैं. इसमें जो 2-3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो आता है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या है. बेसिकली प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल की हम बात करें इन रिलेशन टू अ पैकेज मींस द टोटल सरफेस एरिया. ये पूरा ये वाला सारा सरफेस एरिया, इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एरिया, दिस प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. ये पूरा एरिया को जो हम कवर करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को पैकेज के, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, where the information required under these rules are to be given. जहां पर
जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, वो दिया जाना है। यानी कि आप इसमें कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, कहीं मना नहीं करता कि आप यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते, यहां नहीं दे सकते, यहां पे देना, कहीं ऐसा मना नहीं करता। पैकेज कम्युनिटी रूल में ये पूरा प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है, आप कहीं पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ और रूल्स के अंदर कहा गया है कि फ्रंट साइड में देना है, बैक साइड में देना है। हमारे यहां पर फ्रंट या बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे कैसे, इसके लिए बोलता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन could be grouped together and given at one place। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपने एक ही जगह पर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, कहां देना है, किस जगह देना है, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, लेकिन देना एक जगह है। इसके साथ एक और प्रोविजन दिया गया है कि यदि कुछ प्री प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है और कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, तो प्री प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह पर और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर दिया जा सकता है। ये इसके अंदर दूसरा प्रोविजन दिया गया है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के अंदर। अब आता है हमें डिक्लेरेशंस क्या क्या देने हैं। डिक्लेरेशंस में जब हम बात करें, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर। आई थिंक ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप जब भी देखते हैं हम लोग जो पैकेज बनाते हैं उसमें किसने बनाया है या पैक किया है या मैन्युफैक्चर किया है उसका, या इंपोर्ट किया है उसका, हम नाम और एड्रेस देते ही देते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन यदि इंपोर्टेड है, कॉमन और जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी कि उसके अंदर कमोडिटी क्या रखी गई है, नेट क्वांटिटी कितनी है इन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मेजर, यानी कि किलोग्राम में या वॉल्यूम में या मीटर में एक जो यूनिट है आपकी, उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द पैकेज। एमआरपी कितना है, वी शुड बी ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एज वी आर ऑल अवेयर नाउ इट इज ओनली जीएसटी, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वी कैन से। यूनिट सेल प्राइस, ये एक बहुत ही अच्छा और एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने क्या कहा, पहले क्या होता था कि बहुत सारी कमोडिटीज को हम कहते थे कि ये प्रिस्क्राइब्ड साइजेस हैं। कुछ लोग उनको स्टैंडर्ड साइजेस बोलते थे, कुछ लोग कुछ बोलते थे, हम बोलते थे वो प्रिस्क्राइब्ड साइजेस है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम, इस तरीके से हमने प्रिस्क्राइब किए हुए थे साइजेस को। हम लोगों ने वहां पर उस सेकंड शेड्यूल को जो कि प्रिस्क्राइब करता था साइजेस को, उसको ओमिट कर दिया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब क्या होगा कि, लेकिन साथ में एक छोटी सी चीज डाली है कि जब आप यूनिट, जब आप प्राइस लिखते हैं, एमआरपी लिखते हैं, तो उसके साथ यूनिट सेल प्राइस भी डिक्लेयर कर दीजिए। यूनिट सेल प्राइस के लिए कोई हमें उसमें फैक्ट्री में वापस नहीं जाना है कि पर ग्राम का कितना कॉस्ट लग रहा है मुझे वो निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या है, यदि मैं कहता हूं कि मेरा 100 ग्राम 100 रुपए का है या 100 ml आइसक्रीम मेरा 100 रुपए का है, तो पर ml मेरा 1 रुपए का हो गया। सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसमें कहीं आपको फैक्ट्री से जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट मैथमेटिकल करना है। 100 रुपए का 100 ml, 1 रुपए का 1 ml, सिंपल। या 1000 लीटर 1000 ml आता है 1000 रुपए का, तो 1 ml आएगा 1 रुपए का। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको लिखना है। कुछ लोग बोलते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस, ये भी रूल में डिफाइन किया गया है कि आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको लिखेंगे या लिख सकते हैं। इसके अलावा आता है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, बिकॉज आप फूड इंडस्ट्री हैं तो आप तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही देते हैं आप लोग, मुझे जहां तक लगता है एफएसएसआई भी आपसे वही मांगता होगा। इसके अलावा जो बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट है वो भी फूड इंडस्ट्री सारा दे ही रही है ऑलरेडी, उसमें भी हमें कुछ नया नहीं कहना है। इसके अलावा आता है कंज्यूमर केयर डिटेल्स, ये भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि कंज्यूमर केयर डिटेल्स को भी हम पैकेज के ऊपर नोटिफाई करें, पब्लिश करें कि यदि सपोज करिए किसी भी कंज्यूमर को इन प्लेस ऑफ गोइंग टू द लीगल मेट्रोलॉजी और एक कंज्यूमर फोरम, यदि वहीं बैठ करके सीधा मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से बात करके उसकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, तो इस सारे लिटिगेशन को करने की क्या जरूरत है, सब लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। सीधा वो फैक्ट्री में फोन करे कि मुझे ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपका खराब है, एक्सपायरी है, कुछ भी है, तो आप इसको काइंडली रेक्टिफाई कीजिए मेरी प्रॉब्लम को। और मैंने देखा है जनरली 90% प्रॉब्लम्स उसी लेवल पे सॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज इंडस्ट्री भी नहीं चाहती है कि उसको भी बिना मतलब के अनड्यू इस सारे के सारे हैसल फ्री एनवायरनमेंट में जाना पड़े और वहां जाकर के परेशान होना पड़े। सब लोग चाहते हैं बहुत इजी वे में, यदि कहीं पर कुछ गलती हुआ है उसको मान करके ठीक कर लिया जाए। इसके अलावा जब हम ई कॉमर्स साइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि 1 जनवरी 2018 से ऑपरेशनल है। 4 साल हो गए लगभग उनको। हमारे पास क्या बोलते हैं इसमें, एक तो आपको जो ई कॉमर्स साइट्स है उसके ऊपर नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर देना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन देना है इफ इट इज इंपोर्टेड, कॉमन और जेनरिक नेम देना है, नेट क्वांटिटी देना है, एमआरपी देना है और बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट एंड मंथ देना है, जो कि उस कमोडिटी के लिए विच विल बिकम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन।
तो ये 4-5 डिक्लेरेशंस हैं जो केवल हमें ऑनलाइन साइट्स के लिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वो देनी होती हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें पहले हमने देखा, काफी समय से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे इन द बिगनिंग, अबाउट 2 साल पहले तो बहुत सारी दिक्कतें थी। बट अभी मैं देखता हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि 90% साइट्स पर डिक्लेरेशंस काफी हद तक ठीक है। इवन आफ्टर जब हमें कभी इंफॉर्मेशन मिलती है, कंप्लेन आता है या हम खुद चेक करते समय देखते हैं तो हम उस पर एक्शन लेते हैं और नोटिस वगैरह इश्यू करके उस केसेस को कंपाउंड भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसको धीरे धीरे ठीक कर लीजिए। ये जो ई कॉमर्स एंटिटीज है इनके लिए भी ये जो रूल है 610 में इसका प्रोविजन बनाया गया है अंडर द पैकेज्ड commodities rules। ये क्या कहता है? An e-commerce entity shall ensure that the mandatory declarations as specified in sub rule 1 except the month and year in which the commodity is manufactured or packed shall be displayed on the digital and electronic network used for e-commerce transactions। और क्या डिक्लेरेशंस देने हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यही सारे डिक्लेरेशंस हैं जो कि बाद ये रूल 610 इनडायरेक्ट वे में बोलता है। यही डिक्लेरेशन हम वहां पर मानते हैं। एक और छोटी सी चीज आती है, साइज। क्या साइज होगा जब हम डिक्लेरेशन करेंगे? एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप कहीं पर पैकेट पे दीजिए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जगह आप डिक्लेयर करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल, बिकॉज सारा का सारा सरफेस एरिया हमने प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल माना है, यहां तक कोई डिस्प्यूट, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ये आता है कि हमारा साइज कितना होगा जब हम डिक्लेरेशन करने जाएंगे पैकेज कमोडिटी के ऊपर। यदि हम इसके लिए पहले बहुत सारे कंफ्यूजन थे, हम पहले क्वांटिटी के हिसाब से भी बोलते थे, साइज के हिसाब से भी बोलते थे, हमने सब रिमूव कर दिया और 2018 से बिल्कुल एक सिंपल यही टेबल रह गई है जिसके अंदर हम सारे के सारे साइजेस की बात करते हैं। यदि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, यदि आपने सारा एरियाज को कैलकुलेट किया एंड इफ इट इज लेस देन 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जो हमारा साइज होगा उस न्यूमेरल्स एंड लेटर्स का वो 1 mm का होगा। यदि ये 50 से लेकर 100 के बीच में है तो 1.5 mm होगा, जबकि हम उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। लेकिन यदि ब्लोन करते हैं या मोल्ड करते हैं या फॉर्म करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा रखा गया, 2 mm 3 mm लाइक दैट। ये सारे के सारे साइजेस आपके प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर द रूल्स। वेरी सिंपल, 50 mm तक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना करना है, 100 है तो कितना करना है, 500 है तो कितना करना है, 2500 है तो कितना करना है, और 2500 से ज्यादा बड़ा साइज है तो उसके लिए क्या साइज होगा हमारे डिक्लेरेशंस का, वो सारा का सारा इन रूल्स के अंदर बताया गया है, बनाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो देखते हैं जनरली हम बोलते हैं कि जब एक आपको साइज, देखिए साइज कैलकुलेट करने के लिए वहां पर दिया गया है कि किसी भी बॉटल के लिए कितना साइज लेना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। तो जो, और यहां नेक को या बॉटम इस एरिया को हम कवर नहीं करते जब हम प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया निकालते हैं, दैट इज फॉर ए। मैं इस ए की बात कर रहा हूं, ये जो ए है मैं इस ए की बात कर रहा हूं। इसके लिए बहुत सारी चीजें कवर नहीं होंगी, लेकिन डिक्लेरेशन कहीं भी करें, यहां पे करें, यहां पे करें, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन के लिए हमने पूरा सरफेस एरिया ही प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल माना है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इसका एरिया कितना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस रूल 7 के अंदर दिए गए हैं। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं रूल 7.5 की, तो बहुत सारे डिक्लेरेशंस को हमने कहा है कि ये एफएसएसआई डिसाइड करेगा, हम उसको डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे 3 या 4 या 5 डिक्लेरेशंस हैं जो लीगल मेट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग देने के लिए बोलते हैं। इसी तरीके से एफएसएसआई ने भी अपने रूल्स में इसी तरह से डिसाइड किया है कि कुछ डिक्लेरेशंस को, हेलो प्लीज Mr. Agarwal, या प्लीज, you can speak in English, please. oh, I'm sorry, A little bit. I thought, oh, I'm sorry. So what we have decided that You're more speed, I think. Okay, thank you. So what we have decided, when we are talking about the principal display panel, you may declare at any place. Principal display panel is the whole surface area of this product, but at the same time when we are calculating the area, that area I'm talking about, this area A, this area A is not in this area A, this flange, this top, this neck, this bottom is not covered, so we just have to consider only, and 40% of this area will be taken care for considering this area A, according to which the size of the letters and numerals will be decided. For example, I just take an example. Let's say the total surface area is 1000 square centimeter, but the area which we have to take, let's say 40%. So in this 40%, it will come 400 square centimeter. So this whole surface area will not be considered. We have to take it up in this level, which is 100 to 500. That means the size of the letter and numerals will be 2.5 mm. So this is very simply we have given under the rules. Even after, if there is any problem, you can always contact us. We can always give a clarification wherever
required. But at the same time, it is also asked that no retail dealer or other person, including manufacturer, packer, or importer, shall make any sale of any commodity in packed form at a price exceeding the retail sale price. My request to the association is kindly ensure that this is a very general problem and a genuine problem. What we observe that a thelawala is giving, let's say, 2 rupees extra, 5 rupees extra, 10 rupees extra. So this is very bad. You know, people used to complain, some mere se 1 rupiya extra le liya, and it pinches actually. Why? Because these things has to be controlled. Even when we see in the railways, at the airports, or at some other places, these products are being sold at the MRP, but in the market at some places, if they are selling at more than MRP, my request to the association is kindly advise your vendors, make it ensure that this is not being sold any product at over an MRP, because now we are working in a very good ethical environment, and all the industries as well as all the consumers and the regulators being the same stakeholders, all stakeholders, we are considering that we are not trying to cheat each other. We just have to have a very good harmonious environment where everybody has win-win situation. Again, under section 18(2)(a), it has been prescribed that there will be no declaration of dual MRP, and a product should has a single MRP. No wholesale dealer or retail dealer will alter the price once declared, and there is a provision of registration. I have already discussed with you that we need this. All packaging units, all manufacturing units, or the importers have to get registration under the package commodities rules that what they are manufacturing. And certainly it will help tomorrow when we will be discussing at the association level, that there's Joint Secretary sir has told that how much is the product, how is the market in India, how much is the market in China, and how much is the market in America. So how to grow, how to make the policies in such a way with which we can sit together and we can find how we can grow this particular sector. This is also being amended that under this rule 4, we have amended, we have just added the promotional offer. Earlier it was in rule 5. Rule 5 has been omitted with the schedule 2, and the second schedule it has also been omitted. Again, we have also asked that now it will be the month and year of manufacture only, and we have also asked that the retail sale price. Earlier, there were large number 4-5 illustrations were given, and we have seen that there were large number of unfortunate because there was a problem of understanding, and that's why some few of the notices were issued where the manufacturers were asked that you have not declared like this or that. That's why, considering all this, we have removed these illustrations. You can just have to declare the MRP in Indian currency. That means either in rupees or with a symbol of rupee, either in rupees RS or in a symbol of rupee, so that it should be in Indian currency. Obviously, in India, it has to be in Indian currency, which should be inclusive of all taxes. So this is being made considering that there should not be any communication gap, and whether you are putting an MRP through a slash, through decimal 00, or without decimal, without slash, it should be just understanding. Consumer should understand that there is only the requirement of the rules. Again, the provision of this unit sale price has been introduced, and we are observing that from 1st of October, we will be having that it will come into force. Now, there are just 20 days, and I have seen that large number of products are already declaring this unit sale price in terms of the MRP. What this unit sale price? Basically, it will be declared on every prepackaged commodity in terms of per gram if the commodity or the net quantity is less than 1 kg. As we have just discussed, 100 ml will be in 1 ml only. In terms of 1 ml, 100 ml cost is 100 rupees, 1 ml cost is 1 rupee. Similarly, if it is in length, it will be per centimeter. If it is less than 1 meter and above 1 meter, it will be in per meter. Similarly, per milliliter when it is less than 1 liter, and per liter when net volume is more than 1 liter. Per number or unit if the item is sold by number or unit. So this is the way how very simply it has been defined that how to declare the unit sale price when it is less than 1 kg, 1 liter, or 1 centimeter or 1 meter. Similarly, there is some at the same time some provisions are also being made. Provisions are being given for packages containing alcoholic beverages or spirituous liquor where the state excise laws and the rules are applicable within this state where it is manufactured. Also, if the retail sale price is equal to the unit sale price, then there is no need to declare the unit sale price. So these are the two exemptions at present we are having. One is for the alcoholic beverages, and another is when the retail sale price and the unit sale price both are same, then there is no need to give the unit sale price.
Rule 13.5 has also been amended for declaration of net quantity in number. Basically, it is to just help. Earlier, there was a big problem that somewhere we are telling that it should be either N or U. Now we are saying you just declare this is one pair, one piece, two pair, two sets, any word which is very clear to the consumer, and consumer can understand that this is what is being declared. Otherwise, earlier due to this N and U, we were getting large number of complaints that it is also declaring. It has not been declared in terms of N and U. But I hope that now many of us are declaring in terms of N and U. And if you are declaring N and U, it is also correct. There is no problem. You can continue in the same way. There are some another provisions have been made for tax GST, and secondly there was some provision under Rule 33(2) which was giving the permission to have the declarations which were not allowed in the second schedule, but this was never being used. Under Rule 33(2) we have never given any permission to any of the industries. Some of them were asking for the import purpose, and that's why it was considered that why to be given for the import purpose, and if you have to start, it should be started in terms of only the standard sizes. But now, as we have already omitted this second schedule from 1st of October, anybody can pack any commodity in any size as per his requirement or the market forces decides. Again, there was a provision, if somebody wants to use this rule, even from today, if somebody wants to declare USP, unit sale price, he can do it from today onwards. There is no problem. Anybody can do it. Again, under Rule 6, we have made just very recently, we have made this amendment. Under Rule 6, we have just given this permission for the electronic products which are being manufactured or packed or imported after 15th of July for 1 year only. We are just taking it on we are just considering it on the trial basis, where how it affects or how it benefits the consumer and as well as to the industry. What it speaks that if there is a declaration of the name of the manufacturer, packer or importer on the package itself, that means the name of the manufacturer or packer or the importer has to be given on the package itself, and it has to be informed to scan the QR code for the address and other related information. That means on an electronic product, the name has to be given of the manufacturer, packer or importer, but for the address, it can be given and it can be mentioned that for address you kindly scan the QR code. Address will be in the QR code, because being addressed in 2, 3, 4 lines, it may be difficult many times to declare it on a small packages. So this provision is being made initially for the electronic products for 1 year. Later on we will decide what to be done in consultation with the industries, with the stakeholders. It also scan the QR code for the common or generic name. This can also be given QR code in the QR code for the common or generic name. It also to inform the size and dimensions but the declaration of telephone number and email address will be on the package, and that it will be informed that the other related information is available in the QR code. This is only required when this information is given through the QR code only and not declared on the package. For example, that means if on an electronic product, if the name is given but address is not given, it can be seen through the QR code. If it is given on the product itself, then there is no need to put a QR code. Even after a company wants to put a QR code, there is no problem. Law does not restrict anything. They can continue. Again, there is another small exemption is given for the garments which are sold in loose. Garments or hoisey which is sold in loose or open. What it says that these products are exempted from the packaged commodities rules. However, they have to declare the name and address of the manufacturer or marketer or brand owner or importer with country of origin or manufacturer in case of imported products. Email ID and phone number. Size which are internationally recognizable, because in the garments we generally use S, M, L, XL, etc. along with their metric notation in terms of centimeter or meter. MRP, which is also required in consumer taxes. This exemption is applied to sale of finished products only, not for any other thing. The above information shall be displayed on e-commerce websites also if a product is sold through the e-commerce sites. Any manufacturer, packer or importer, if he wants to start immediately to use these provisions or these relaxations, he can start immediately. Again, this fourth schedule or PCR provides that the net quantity for declaring non-edible vegetable oil, edible oil, vanaspati ghee and butter oil may be declared in weight or volume.
Second schedule provides that if the net quantity is declared in volume, it must be declared in mass also. So what we were observing, but however, there is no requirement or provision for mentioning the specific temperature on packing of the edible oil, which may cause the cheating. Actually, what was happening that nowadays it was observed since last many months we were getting these type of complaints that few industries are declaring the edible oil 1 liter when packed at 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, and so on. And it was observed that the volume was 1 liter, but the mass was continuously reducing. So we have asked that the industry, the edible oil or these products should not declare with temperature, because under the rule it is not required to be declared in the declare with the temperature. And that's why now everybody, after from the 6 months, actually this time we have given this 6 months time to change their packaging and to remove this temperature provision, and it has to be 1 liter at all time at all places. This is being asked from the industry to just safeguard the interest of consumers. Basically, state government has been requested to create awareness among the manufacturers, packers, and it has been to advise them to ensure the quantity declared in volume and mass should also be there. Manufacturers and the packers have been advised to correct their labeling for declaring net quantity in terms of volume within 6 months from the date of this direction, which should be without mentioning temperatures, and the field officers have been asked to take action if it does not happen. Again, a very important thing, we have asked the public consultation for declaring 2 or more prime constituents of the commodity. It is observed that the commodity which is being sold in the market has some USP. USP means unique selling point or basically unique selling proposition. For example, we say जैसे हम आटा लेते हैं, in this order that it is what we call mixed, जिसमें बहुत सारा चने and other things are also mixed. Like we say chocolate, a particular chocolate which is being sold in a particular USP, but we do not know, a consumer does not know how much is the actual USP quantity. So we have requested, we have just invited the comments. We are examining what comments we have received. Large number of comments we have received because the last date was 31st of August, and now we have received large number of comments on this issue from all the manufacturers and the industries as well as from other stakeholders. We are examining that what to do and basically how it will protect the interest of industry as well as to the consumer, because now many industries are actually giving, when we talk that it is an edible oil which is blended edible oil, maybe blended mustard oil blending with let's say mustard oil with with any other oil, but how much is the preposition, how much is the percentage of that brand oil or other oil, we do not know. So consumer may require that this should be 100%. This should be 100% mustard oil, but he is not able to buy because this is and secondly, he does not know whether the mustard oil which he is going to buy, it is 10% mustard or 90% mustard. Nobody knows. So that's why we have requested that on the front side with the logo, brand name or logo, we have to declare at least 2 prime constituents which are making this product. All e-commerce entities have also been requested to comply the provisions of law. Wherever there is a problem, we have issued the notices and we have asked the industries to kindly comply the provisions of law. Similarly, for the weighing and measuring instruments also, large number of notices have been issued for violation of the provisions of Act. The purpose is when a very good industry or a person is complying the law, the others should not be given the liberty or the benefit of this violating the laws. This is the small discussion which I wanted to share with you, which are the recent amendments which we have till today. The rest of the things will follow as soon as they come. This is the small thing. Thank you very much. Now we can take the questions if you have. Yeah, I can. I think we have. I'm seeing that there are the questions or the points in the chat box also. I'm taking one by one. Will it be okay? Yes, fine. हाँ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, धन्यवाद. I request for Girish bhai to give the moderator ask any one question and answers. आशुतोष जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था. ऐसा लग रहा था कि लीगल मेट्रोलॉजी का बुक नहीं लेना चाहिए. आपका पीपीटी प्रेजेंट्स का जो है वही हमको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है. Sure, I will do that. No problem. No problem. सर, हमारा इंडस्ट्री का एक, अगर हम भी बम्बई से हैं, हम नेचुरल आइसक्रीम्स करके कंपनी है हमारा.
तो हमें इसमें कोई लीगल मेट्रोलॉजी का फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे को जो स्टोर में जो आइसक्रीम पार्लर्स जो स्टोर होते हैं वहां पे जो है ना लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेबल है क्या, क्योंकि अक्रॉस द काउंटर सेल किया जाता है। नो डाउट हम तो लिखते हैं 80 ग्राम्स आइसक्रीम्स नहीं करके, बट कब कब क्या होता है कि जो ऑफिसर्स आते हैं बोलते हैं कि आप उस पे एमआरपी लिखना चाहिए कप के ऊपर, जबकि कप पे लिखा है सेल अक्रॉस द काउंटर अक्रॉस द ये, फिर भी कभी कभी बोला जाता है। तो हाउ टू हैंडल दैट क्वेरी? देखिए, जब जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जा रहा है उसके लिए बेसिकली सेल होने से पहले या जब फैक्ट्री में जब तक बनता है, फैक्ट्री से निकलने से पहले हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। बिकॉज जब तक आपका फैक्ट्री में बन रहा है वो प्रोडक्ट अभी फाइनल हुआ नहीं है, उस टाइम पर आप कह सकते हैं अभी मेरा मार्केट में गया ही नहीं, अभी निकलने से पहले हम सारे के सारे डिक्लेरेशन देंगे। बिकॉज पता नहीं है ना वो आज मार्केट में निकलेगा कल मार्केट में निकलेगा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप उसी टाइम देते होंगे। तो इसीलिए आप ये हमेशा कह सकते हैं यहाँ पर जो लॉ की प्रोविजन है वो यही है कि जो मार्केट में जाने से पहले उसको लॉ को कंप्लाई करना है। Yeah, next, anyone want to question? हाँ सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सुधीर भाई, Please. केतन? Yeah, please give me a introduction. अग्रवाल साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट आपका जो प्रेजेंटेशन था इतना एनर्जेटिक था कि वी आर रियली इम्प्रेस। आप यू आर अ वेरी गुड स्पीकर एंड आपने इतना एनर्जेटिकली हमें ये प्रेजेंटेशन दिया है कि वी वुड लाइक टू हियर इट अगेन। और प्लीज अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो वो हमें एक्सेस जरूर दें सो दैट वी कैन रेफर इट इन फ्यूचर ऑल्सो फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। सर मेरी दो तीन क्वेरीज हैं। एक तो सर ये जो कस्टमर केयर डिटेल्स हैं इसमें हमें क्या क्या चीज मेंशन करनी, क्योंकि यूपी में कुछ हमारे मेंबर्स को नोटिस सर्व हुए जिन्होंने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाला हुआ है लेकिन एड्रेस नहीं था, एड्रेस मैन्युफैक्चरर का एड्रेस था। तो क्या ये कोई किसी तरह का वायलेशन ऑफ लॉ है? हाँ, एक्चुअली क्या है जो हमारा ये रूल 6(2) है, ये बोलता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर केयर पर्सन, उसमें आपको नेम देना है, एड्रेस देना है, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, यू हैव टू गिव ऑल दीज डिक्लेरेशंस। बट इफ द नेम एंड एड्रेस इज द सेम as the manufacturer or the marketer or the importer, then you can mention it over there that name and address as above, because it is not necessary to repeat the same thing, which will not affect, which will not safeguard any interest. But what we can do before that, if I will request Sudhir bhai to kindly send a presentation that we can issue a circular to all state governments that when it is mentioned at one place and the manufacturer is mentioning that it is as above, then there is no need to declare the same thing again and again. We can do that because it is required once only. Thank you, sir. Thank you. Secondly, you mentioned that if there's some mistake in the packaging material which we observe, and then we can take a permission because if that packaging material is in bulk with us, so what is the procedure for that? And There is no procedure, just a request letter. Okay, sir. Just a You can send a request letter that this is a problem and kindly allow us this much time so that we can correct it. Yeah. Thank you. Sir, one more question from here. Just wait. Hello. सर संजय सुधीर भाई, मैं क्या सोचता हूँ ये जो क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं ना, पहले ये पढ़ देता हूँ तो मुझे लगता है शायद वैसे ही बेटर आइडिया ना, इसको पढ़ देता है। देखिए क्वेश्चन आया है, सर कैन यू अप्रूव अ 2D barcode system to put all the details electronically? See, all right, as today you can always allow to declare all the declarations through a barcode, there's no problem at all, but at the same time with the barcode you also have to declare on the package itself, because slowly this barcode will itself become more common, and in place of reading the declarations on the package, the people or the consumer will start looking towards the barcode. So kindly make it first more popular, more consumer friendly, so that consumer himself should say that there is no need on the package, we can see easily on the barcode. So but still the law does not restrict, you can continue it from today at the same time with giving the declarations on the package. Request. Okay, I'm sorry, मैं थोड़ा fast गया. Online printing of net quantity is acceptable as per legal methodology for prepackaged products. As far as net quantity is concerned, not only net quantity, there is nowhere mentioned that what will be given on the prepackage and what has to be given on the on this online. So it is up to the manufacturer, the packer or the importer. He has to decide what he will give online and what he will give on pre-printed. So it is allowed. MRP भी allowed है, net quantity भी सब कुछ allowed है, यहाँ कहीं मना नहीं किया गया है. How to express unit sale price for ice cream? Since most of the brands expressing net quantity in both volume
and weight basis whether USP to be expressed both in volume and ml, so volume and weight. ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यदि आज की डेट में आप जब 2 यूनिट्स में दे रहे हैं तो आपको यूएसपी की कैसे देंगे? मुझे क्या लगता है, यदि हमने उसको यूएसपी 1 लीटर एंड 1 लीटर या 500 ग्राम या 200 ग्राम लिखा है या 600 ग्राम लिखा है, तो इट इज वेरी इजी। जब हम यूएसपी लिखेंगे यूनिट सेल प्राइस, तो वहां पर एमएल और पर ग्राम दोनों दे देंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो एक आपने पूछी है बात, हमारे पास फिर क्वेश्चन ये आएगा कल कि क्या दोनों में देने की जरूरत है, फिर हम वॉल्यूम और वेट में क्यों करें। अगेन फिर कल कोई बोलेगा कि वॉल्यूम में क्यों करें, वेट में क्यों ना करें, या वेट में क्यों करें, वॉल्यूम में क्यों ना करें। तो वो एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से हम एमआरपी दे रहे हैं उस तरह से हम यूएसपी लिख करके पर एमएल ऑब्लिक पर वॉल्यूम कर देंगे तो वो इजीली चलता रहेगा, वहां कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सप्रेस यूनिट सेल प्राइस फॉर घी, since most of the brands expressing net quantity in both, again the same question, घी के लिए भी वही है जो आपका आइसक्रीम के लिए। How to express unit sale price for ghee since most of the brands, अच्छा वो net quantity से, whether USP is required for restaurant type products, रेस्टोरेंट टाइप प्रोडक्ट्स। देखिए, जब आप यूएसपी की बात कर रहे हैं तो वहां पर जब हम रेस्टोरेंट में यूएसपी, अभी तक तो केवल ये प्री पैकेज कमोडिटी की बात की गई है, और वहां पर रेस्टोरेंट में हमने केवल मांगा है कि जब आप नेट क्वांटिटी और उसके साथ एमआरपी लिख दीजिए, तो वहां पर यूएसपी नहीं मांगा गया है। इसलिए वहां पर रेस्टोरेंट में जो हम आपका रेडी टू ईट फूड बेचते हैं या रेडी टू ईट मटेरियल बेचते हैं, मटेरियल सेल करते हैं, तो वहां पर इस यूएसपी की जरूरत नहीं होगी। Is it fine to express the ghee net quantity in volume basis instead of weight? नहीं, अभी तो वॉल्यूम और बेस दोनों में देते हैं, तो उसको अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रूल में अमेंड करना पड़ेगा। For ice cream cups of say 50 ml, 100 ml, 1 liter pack, etc., which are sold as retail packs, do we need to mention unit sale price? Yes, we have to, because unit sale price आपका देना ही देना है, जो भी आपके प्रोडक्ट आप सिंगल रिटेल प्राइस, रिटेल सेल में सेल कर रहे हैं। What should be the font size for USP? Yes, it is again a very good question. देखिए, यूएसपी का कोई फॉन्ट साइज बनाया नहीं गया है, तो हमने सारे डिक्लेरेशंस का कहीं पर भी अलग अलग कोई साइज डिसाइड नहीं किया है, सबके सेम साइज दिए गए हैं, तो उसी तरीके से यूएसपी भी उसी साइज में जाएगा। हाउ टू एक्सप्रेस यूनिट प्राइस इन आइसक्रीम? वेरी गुड। लेट्स से आपका एक आइसक्रीम है जो कि 50 ml का या 100 ml का आइसक्रीम है, और उसको आप 100 रुपए में बेचते हैं, 100 ml का आइसक्रीम 100 रुपए में बेचते हैं, तो हम लिखेंगे 1 रुपी पर ml। It is very simple. Similarly, as we are doing for others. For milk products, is it compulsory to declare milk drop sign on the principal display panel? देखिए, जहां तक मिल्क ड्रॉप साइन की बात है, ये लीगल मेट्रोलॉजी आपसे नहीं मांगता है। आप किसी दूसरे लॉ के अंदर इसको दे रहे होंगे, तो वहां पर उनसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। लीगल मेट्रोलॉजी में हम कहीं भी ड्रॉप साइन की इसकी कोई बात नहीं करते। तो ये एक कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर आए थे, वो मैंने आपके ले लिए। इसके अलावा यस, अब हम लोग बाकी क्वेश्चन ले सकते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन आंसर सेशन और इसमें देख लेता हूं, कहीं कुछ क्वेश्चन आंसर तो किसी ने नहीं पूछे हैं। नहीं, क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है, बस यही थे। तो अभी आप इसके अलावा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, प्लीज। हेलो प्लीज, हाँ जी, बोलिए। Thank you for your nice presentation. I want to know one thing on whether legal metrology rules are applicable for the invoice cash bill, what we are giving to the consumer upon purchasing the product. See, as far as invoice bill is concerned, basically invoicing you are doing for the consumer, and for GST also, and for consumer protection and the Consumer Protection Act, you are issuing the invoice. But if whatsoever you are declaring on an invoice, that should be as per the legal metrology rules. For example, we cannot sell a product in a unit which is not in terms of SI system of units. Let's say you will not sell your ice cream or your product milk etc. in let's say gallon or in other small units which are not applicable, which are not in use in India. It should be in terms of MCAS system. हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग एक आइसक्रीम से और दूसरा एक घी से। पहला तो एक आइसक्रीम से ये क्वेश्चन है सर, आप जो बोल रहे हैं पर ml और पर ग्राम, एक्चुअली व्हाट हैपन इन आइसक्रीम इन 2017 to 2011 in time to time changes of a legal metrology, volume per ml or volume in gram, now is only in volume, right sir? Yes. Only when ml यानी 1 लीटर से कम है तो सिर्फ ml में ही देना है। Yes, पर नो, आप एमआरपी लिखेंगे, एमआरपी 100 रुपया है, लेकिन यूनिट सेल प्राइस यानी कि पर एमएल कितना प्राइस है वो भी देना है।
राइट राइट। नहीं, सम केसेस सर क्या होता है, कुछ एमआरपी हमारी प्री प्रिंटेड होती है, कुछ एमआरपी प्री प्रिंटेड नहीं होती है, दैट टाइम You can. Hello. सेकंड क्वेश्चन। हेलो बोलिए। सर, सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ ए घी। इन सम प्लेसेस सर लीटर में घी को लिया जाता है या सम प्लेसेस केजी में लिया जाता है। जैसे आपका एक वहां पे था घी, नो नीड टू ओनली नीड अ डिक्लेरेशन इन वॉल्यूम और नो नीड टू बी अ टेम्परेचर डिक्लेरेशन आर देयर। Yes. सम प्लेसेस आर देयर, क्या होता है सम प्लेसेस में केजी में उसको लिया जाता है और सम प्लेसेस में लीटर में लिया जाता है, तो वहां पे फिर लीगल मेट्रोलॉजी का कैसे होगा। कुछ जहां पर लीटर में दे रहे हैं एज पर द रूल, यदि रूल अलाउ करता है लीटर में देने के लिए तो पर एमएल करेंगे। जहां पर केजी में दे रहे हैं रूल के हिसाब से, वहां पर ग्राम में देंगे। Because you don't have to, you just have to do the calculation. Please try to understand. Calculation करनी है. Calculation, in the calculation, if MRP is given in ml, your product is in ml, you have to give it in per ml. And if the MRP is as per kg, you have to give it in per kg, in per gram. मैं क्या अभी एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो यूनिट प्राइस का 1 अक्टूबर 2022 से आप बोल रहे हो सर, विद इन 20 डेज हाउ कैन बी पॉसिबल, इसको 6 महीने एक्सटेंड और या कुछ मिल सकता है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली में क्या है कि ये ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया जा चुका है। ये रूल लास्ट ईयर नवंबर में आया था। एक्सटेंशन ऑलरेडी अभी अक्टूबर में खत्म, ये सितंबर में खत्म हो जाएगा। लेकिन आफ्टर यदि किसी के पैकेज बच गए हैं तो वो आप सुधीर भाई उनको प्लीज बता दीजिए, वो एक रिक्वेस्ट लेटर दे देंगे तो हम लोग उनको परमिशन दे देंगे पैकेज को यूज करने के लिए। Thank you, Jaideep. Thank you. जयदीप साहब प्लीज। Jaideep, okay, enough. Now, sir, can we go for अपना माइक स्विच ऑफ कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। मेरे 2-3 credit goes to Sudhir bhai, who actually he only asked me, direct me to do this. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक्स सो मच। मेरे 2-3 प्रश्न हैं आशुतोष जी। आप टेक्स्ट कर दीजिए, हम आपको उत्तर दे देंगे। आप टेक्स्ट कर दीजिए, हम उत्तर दे देंगे आपको। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं अभी बात कर लूं तो मेरे को ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय दे, तो काफी लोगों को समय है। 1 मिनट मैं आपकी विनती कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के बाद टेक्स्ट करिए, हम आपके समय है तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो या तो आशुतोष जी का फोन नंबर मिल जाए तो हम उनसे अलग से बात कर सकें। बिल्कुल 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 सुधीर जी दे दीजिएगा प्लीज। सर आप अपना नंबर बता दें। मैं अभी इस पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच। Hello. Thank you, Ashutosh ji. Thank you for your detailed Sir, one more question, sir. We are grateful from Ice Cream Association. No, one more question. Thank you again. Hello. थैंक यू। Sir, one more question, please, sir. Now the time is 600 star has to go. So we request sir, we can just close the issue. Thank you. So now we can, sir, we close this now. Sudhir bhai, my request is kindly you take all the questions and kindly send it to me so that I will reply to you and you can circulate in your association. We can close now. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.